गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है आज के लेक्चर का रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इस बारे में कि इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो थ्री इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं हमारे। आज इन इलास्टिक कांस्टेंट्स में रिलेशंस कैसे आप इक्वेशंस हम लोग बनाएंगे, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, पहला टॉपिक आज का हमारा है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। ओके, तो जैसे कि हम जानते हैं तीन इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं हमारे पास। नंबर वन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जिसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल ई से। नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट है हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। जिसे जनरली डिनोट करते हैं जी से, और सी से भी कहीं कहीं डिनोट किया जाता है इसे। और नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट है हमारे पास बल्क मॉडुलस। जिसे जनरली डिनोट करते हैं के से। इन तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच आज रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर ए सॉलिड क्यूब whose one face is, let us consider a solid cube of L, M, S and T. Okay, this solid cube is subjected to a shear force, subjected to a shearing force F. Due to this shearing force, a shear stress is produced along the surface of plane MS and LT of magnitude tau. Okay, due to this shearing force F, the shear stress developed in the faces MS and LT is tau. The complementary shear stresses produced in the faces ML and ST is also equal to the shear stress tau. Okay, complementary shear stress face ML or ST पर. Okay, due to the shearing load, the cube is distorted to the point distorted like this.
point M is shifted to the point M dash, and point S is shifted to the point S dash. Okay. And the diagonal, now the diagonal of the cube will be shifted from LS to LS dash. Okay. Now, if the shear strain is phi, is if this angle is equal to the phi, in that case, shear strain phi will be equal to the SS dash upon ST. From this right angle triangle, SS dash T, here tan phi is equal to the SS dash upon ST. If the angle phi is very small, then in that case tan phi will be equal to the phi. So from here the shear strength phi will be is equal to the SS dash upon ST. Okay. And we also know that shear strain is equal to the shear stress upon modulus of rigidity. Okay. According to the Hooke's law, we know that stress is directly proportional to the strain, and in that case, shear strain will be shear stress upon modulus of rigidity. Okay. Now, SS dash upon ST will be equal to the shear stress upon G, tau upon G, equation number 1. Now, on the diagonal LS dash, on the diagonal LS dash, draw a perpendicular from the point SN. Okay, draw a perpendicular SN. Here the phi is very small. In that case, we know that in a cube, diagonal makes a angle of 45 degree with the side of the cube. If the phi is very small, in that case, this angle will also be equal to the 45 degree. Okay. Now, now we have now the strain in the diagonal. Strain in the diagonal will be equal to the change in the length upon initial length. Now the change in the length is ns dash, and the initial length is ln, which is equal to the ls. So from here, so from here, diagonal strain will be equal to the change in length upon initial length. Here phi is very small, in that case ln will be is equal to the ls. Okay, equation number 2. Now from the right angle triangle,
SS dash n, from the right angle triangle SS dash n, here ns dash will be equal to the SS dash cos 45 degree, or SS dash upon under root t 2, cos 45 is equal to 1 by under root 2. Okay, and from the right angle triangle LST, from the right angle triangle LST, okay, LS is equal to the ST upon cos 45, or it will be equal to the under root 2 into ST. Okay, now putting these values in equation number 2, the diagonal strain will be equal to the SS dash upon under root 2 into under root 2 ST. Okay, this will be equal to the 1 by SS dash upon 2 ST. Okay, now from the equation number 1, SS dash upon ST is equal to tau upon G. Now from here, strain in diagonal, or diagonal strain, will be equal to the tau upon 2G, or we can replace this tau with sigma n, where sigma n is the normal stress due to the shear stress tau. Okay, now the net strain in the direction of diagonal LS, the net sigma n is equal to the normal stress. Okay, the net strain in the direction of diagonal LS. In first lecture, we derive the generalized Hooke's law, equations for generalized Hooke's law, where strain in a particular direction will be equal to the stress in that direction. Suppose we have to calculate the strain in x direction, total strain in x direction, as we know that uh, if the longitudinal dimensions are changed, in that respect the lateral dimension of the body will also be changed. Due to this, the total strain in a particular direction will be affected by the deformation or strain in other direction. So from the generalized Hooke's law, we can calculate the total strain in a particular direction. Here
Strain in x direction will be equal to the stress in x direction upon modulus of elasticity minus Poisson's ratio upon modulus of elasticity multiplied by within bracket sigma y plus sigma z. The stress is in other two directions. Here यहाँ अगर LS डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है हमें, तो LS में तो हमारे यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और एम्प्टी डायगोनल के अलोंग कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारे प्रोड्यूस हो रहा है. तो टोटल जो स्ट्रेन होगा बेसिकली दैट विल बी इक्वल टू दी नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी माइनस यहाँ एक और डायरेक्शन, दूसरी दो ही डायरेक्शंस में केवल स्ट्रेसेस हैं, एक LS के और एक परपेंडिकुलर टू दी LS विच इज अदर डायगोनल एम्प्टी. ओके, तो इसके अलोंग जो स्ट्रेस होगा वो आपकी लेटरल स्ट्रेन होगी और लेटरल स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, म्यू अपॉन ई, और यहाँ पर जो ये स्ट्रेन है वो माइनस है, कंप्रेसिव है, तो यहाँ से जो टोटल स्ट्रेन आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा एन अपॉन ई प्लस सिग्मा एन अपॉन म्यू अपॉन ई. ओके, तो टोटल स्ट्रेन in the direction of diagonal LS will be equal to the sigma n upon E within bracket 1 plus, yeah, we can say this 1 plus mu. Okay, sigma n upon E bracket में 1 plus mu. Now comparing this equation with the above equation which is sigma n upon 2g, the diagonal strain will be sigma n upon 2g, हमने कैलकुलेट किया था अभी ऊपर, और जनरलाइज हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेन आएगा वो सिग्मा एन अपॉन ई प्लस इन द ब्रैकेट 1 प्लस म्यू के इक्वल होगा. सिग्मा एन से सिग्मा एन यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई विल बी इक्वल टू दी 2g 1 प्लस म्यू, where mu is the Poisson's ratio. Okay, now relation between modulus of elasticity and bulk modulus. Relation between modulus of elasticity and bulk modulus K. Okay, net compressive strain in each axis from the generalized Hooke's law. अगर हम टोटल स्ट्रेन फाइंड आउट करें, नेट कंप्रेसिव स्ट्रेन अगर हम डिटरमाइन करें, compressive strain in each axis, वैल्यू क्या होगी, लेटरल लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन माइनस सिग्मा एन अपॉन म्यू सिग्मा एन अपॉन ई minus mu upon E sigma n. Okay, now the total compressive strain will be is equal to sigma n upon E 1 minus 2 mu. Okay, ये टोटल स्ट्रेन है जनरलाइज हुक्स लॉ से, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो स्ट्रेन हमने फाइंड आउट किया. और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, ये लीनियर एक्सपेंशन है एक हर एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर हमें निकालना हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV इज इक्वल टू होगा 3 इंटू लीनियर स्ट्रेन, जो भी एक डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन हमने फाइंड आउट किया, यानी कि सिग्मा एन अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू. क्यों,
जो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्यूब का। अभी सबसे पहले अपर इक्वेशन से हमने क्या फाइंड आउट किया कि भाई लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है, या ये विड्थ कितनी इंक्रीज हुई है, हाइट कितनी इंक्रीज हुई है। तो सपोज ए लेंथ में इंक्रीज हुआ, ए विड्थ में और ए हाइट में, तो टोटल वॉल्यूम में चेंज कितना होगा, वो वॉल्यूम में चेंज आएगा आपका, वो ए क्यूब के बराबर होगा 3a, a इंटू ए इंटू ए। तो टोटल strain, volumetric strain will be is equal to 3 into linear strain। एक भी डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन फाइंड आउट किया हमने उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम जानते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है नॉर्मल, जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फ्रॉम हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये फार्मूला हमें पता है। दोनों को कंपेयर कर दें, सिग्मा एन अपॉन के will be equal to the 3 into sigma n upon E 1 minus 2 mu. Then relation between modulus of elasticity E will be is equal to the 3 into bulk modulus 1 minus 2 mu. Okay, और अपर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में जो रिलेशन था वो 1 प्लस 2g E is equal to 2g 1 plus mu. Okay, now now from this equation determine the value of mu. E minus 2g will be equal to the 1 plus mu, sorry डिवाइड होगा ये, ओके, E upon 2g 1 plus mu, from here mu will be is equal to the E upon 2g minus 1. Now putting this value in equation in the above equation, okay, in this equation, so what is E is equal to the 3k 1 minus 2 mu. Now replace the value of mu. E is equal to the 3k bracket 1 minus 2 in E plus 2g minus 1. Now E upon 3k is equal to the 1 minus 2e upon 2g minus 2 और minus 1 minus e upon g. Now E upon 3k plus E upon g is equal to minus 1. Wait a minute, this will be plus 2, so this will be plus 3, okay, this will be plus 3. Now E upon 3k plus E upon g is equal to plus 3. E को कॉमन कर लिया ब्रैकेट में, यहाँ आ जाएगा g plus 3k upon 3kg equal to 3, और E will be equal to the 9 kg upon 3k plus g. Final relation between modulus of elasticities. Oh, sorry, relation between elastic constants. Okay. Now today's
next topic is stresses due to temperature change. Stresses due to temperature change. Stresses due to temperature change, or we can say this thermal stresses. Okay, thermal stresses or strains. Thermal stresses and strains. हाँ जी. If the temperature of a body is raised or lowered, then in that case the dimensions of the body will decreases or increases correspondingly. Okay, अगर किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, मान लीजिए लेट अस कंसीडर ए शाफ्ट ऑफ लेंथ L, एंड अगर इस बार के इस रॉड के टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से इस बार की शाफ्ट की लेंथ में इंक्रीज होगा, हम जानते हैं. और अगर इसके टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, कम किया जाए, जो भी टेम्परेचर अभी है उस टेम्परेचर से, तो इस केस में आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, सॉरी जो बॉडी की लेंथ है वो कम होगी, है ना. इस केस में अगर इस रॉड के एक्सपेंशन को रोका जाए, हम इसको एक्सपेंड नहीं होने देते हैं, हमने दोनों पॉइंट से इसको फिक्स कर दिया है, और इस बॉडी के टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया जाए तो एक्सपेंशन बार में रॉड में एक्सपेंशन होगा, बट ड्यू टू दी फिक्स सपोर्ट्स एक्सपेंशन कम नहीं हो पाएगा, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो जिस इस जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, उसको रोका हमने उस एक्सपेंशन की वजह से. ठीक है, उस टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह से और एक्सपेंशन को रोकने की वजह से इस मटेरियल में, इस बॉडी में स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेसेस, जिन्हें हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेसेस. और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी लेंथ को इंक्रीज होने दिया जाए तो जो एक्सपेंशन होंगे उसे हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेन्स. तो बेसिकली let L is equal to the length of the bar rod, length of a bar, length of bar, clear, of uniform cross section. क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है इसका. इनिशियल टेम्परेचर है रॉड का जो वो है T1, इनिशियल टेम्परेचर of bar is T1 and final temperature of the bar is T2. Temperature of bar is T2. Okay, and alpha is the coefficient of linear expansion.
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कितना या कितनी यूनिट लेंथ में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो उस मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो चेंज आएगा बॉडी की लेंथ में, वो एक्सटेंशन क्या होगा अगर टेम्परेचर जो T1 से T2 वेरिएशन हो रहा है उसकी वजह से, तो द एक्सटेंशन in the bar due to rise in temperature. Okay, alpha into change in temperature into L. Okay, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने से अल्फा यूनिट लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो एल लेंथ अगर हो पूरे रॉड की तो कितना इंक्रीज होगा, वो अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल के बराबर। क्लियर? नाउ if this elongation in the bar is prevented by some external force or by fixing the bar ends, the temperature strain thus produced will be given by, तो thermal strain और temperature strain will be, thermal strain will be is equal to change in length, extension is alpha into delta t into L, divided by initial length which is L. So the strain will be alpha into T2 minus T1. Okay, and thermal stress will be, the thermal stress will be equal to the strain into modulus of elasticity, and the here strain is alpha into T2 minus T1. So the stress, thermal stress will be alpha into delta T into E. Okay, now कुछ प्रॉब्लम्स इस पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आज। ओके, तो प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल थर्मल स्ट्रेसेस पे बेस्ड। ओके, a brass rod 2 meter long is fixed at both its ends. If the thermal stress is not to exceed 76.5 megapascal, एक ब्रास रॉड है जो 2 मीटर लॉन्ग है और उसके दोनों एंड्स फिक्स हैं। लेंथ है हमारे पास 2 मीटर। If the thermal stress is not exceed, थर्मल स्ट्रेस गिवन क्या है हमारे पास, गिवन length of rod L is equal to 2 meters. सेकेंड, थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ,
that is 76.5 megapascal. 1 Pascal is equal to the 1 Newton per meter square. Okay, 1 Pascal is equal to the 1 Newton per meter square. और 1 megapascal is equal to the 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर. तो यहाँ पर जो लेंथ है वो मीटर्स में दिया हुआ है, तो इसे हम चेंज कर लेंगे मीटर्स में. 76.5 मेगा मीन्स 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर थर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है. ओके, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है गिवन है. कैलकुलेट द टेम्परेचर थ्रू विच द रॉड शुड बी हीटेड. अब इतने इससे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप ना हो तो कितने टेम्परेचर तक इसको हीट किया जा सकता है वो हमें फाइंड आउट करना है. टेक द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 के. तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर केल्विन. ओके, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है 90 GPa. इसे हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू 10 टू गीगा पास्कल मीन्स 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ फार्मूला हमें पता है थर्मल स्ट्रेस का. थर्मल स्ट्रेस is equal to the coefficient of linear expansion multiplied by change in temperature into modulus of elasticity. ये फार्मूला होता है, हम जानते हैं. मैक्सिमम वैल्यू जो स्ट्रेस की हो सकती है वो 76.5 है इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 17 इंटू 10 पावर माइनस 6 कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया हुआ है यहाँ पर. ओके, टेम्परेचर कितना रेज करना है वो हम यहाँ पर डिफरेंस डेल्टा टी ले ले रहे हैं. और हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 90 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्लियर. इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. टेन टू द पावर 6 10 to the power 3. So delta T will be equal to the 76.5 upon 17 into 90 into 10 to the power minus 3, or say 76.5 into 10 to the power 3 upon 17 into 90. Okay, if we calculate this, (76.5) divided by 17 divided by 90. सो टेम्परेचर रेज होगा 50 केल्विन का. कैलकुलेट करके हमने फाइंड आउट किया 50 केल्विन.
अगर 50 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो 76.5 मेगा पास्कल का स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा इस ब्रास रॉड में। ओके, नाउ कम टू द सेकंड न्यूमेरिकल। ओके, a steel bar fixed at its both ends is heated through 15 Kelvin, 15 केल्विन तक इसे हीट किया गया। ओके, calculate the stress developed in the bar if modulus of elasticity and coefficient of linear expansion for the bar material is 200 gigapascal and 12 into 10 power minus 6 per Kelvin respectively। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस कितना इंड्यूस। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिवन क्या है, हमारे पास दिया क्या हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर हीटेड थ्रू, तो चेंज इन टेम्परेचर इज गिवन 15 केल्विन। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दिया हुआ है, 200 गीगा पास्कल। ओके, और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है हमें 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 पर केल्विन। फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बार। सिंपल डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, थर्मल stress will be is equal to the alpha into delta T into E. Alpha is 12 into 10 to the power minus 6, delta T is 15 and E is 200 gigapascal और into 10 to the power 9, इसको इससे गीगापास्कल को चेंज कर लेते हैं हम लोग, that is 200 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अगर चेंज नहीं करेंगे तो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड वही उसमें ही आएगा गीगा पास्कल में, तो गीगा पास्कल में ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ 10 टू द पावर माइनस 6 है तो इसलिए चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसमें भी क्या वैल्यू आती है देख लेते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, 12 इंटू 15 इंटू 200, इसको आप 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेगा पास्कल में, मेगा पास्कल कर दें इसको, 10 टू द पावर 3 कर लें इसे, चलो 10 टू द पावर अगर 9 ले लेते हैं तो ये आएगा 36,000 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो 36 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन राइट दिस 36 मेगा पास्कल। That will be the thermal stress induced in the material due to the temperature change of 15 Kelvin। ओके, सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें, बहुत ही सिंपली आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट यूनिट के सारे हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट जो है वो हमारी है shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये। ओके, इसमें हमें डिस्कस करना है यूनिट 2 में shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बीम्स, लोड्स एंड रिएक्शंस। आज हम लोग टाइप्स ऑफ बीम्स फाइंड आउट कर लेते हैं, कितने तरह के बीम होते हैं ये समझ लेते हैं, और लोड्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ बीम,
5 टाइप के बीम्स हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम किस तरह से होता है? इफ ए बीम supported at its end by a knife edge freely, then this type of beam is known as simply supported beam. अगर बीम के एंड पॉइंट्स को फ्रीली किसी नाइफ एज पर सपोर्ट दे दिया जाए तो उसे कहते हैं हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम। फर्स्ट टाइप का जो बीम है हमारे पास। सेकेंड टाइप ऑफ बीम इज कैंटिलीवर बीम। What is cantilever beam? If the one end of the beam is fixed and other end of the beam is free, then this type of beam is known as cantilever beam. Okay. नेक्स्ट टाइप का जो बीम है हमारे पास that is fixed beam. If both the ends of the beam are fixed, then this type of beam are known as fixed beam. If both the ends are fixed, and this type of beam is known as fixed beam. Next, fourth type, overhanging beam. What is overhanging beam? If some portion of the beam is hanged freely beyond the supports, this type of beam is known as overhanging beam. Here, some portion of the beam is hanging freely beyond this support B, then this type of beam is known as overhanging beam. Okay. And the last type of beam is continuous beam. What is continuous beam? If a simply supported beam having or a beam having more than two supports, if a beam having more than two supports, the beam is known as continuous beam. More than two supports. If a beam having more than two supports, this type of beam is known as continuous beam. Okay. In this unit, for shear force and bending moment for cantilever beams, pin support and roller supported beams. तो सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम के लिए ही हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लोड की। थ्री टाइप के लोड्स होते हैं बीम्स में। पहला है आपका पॉइंट लोड।
अगर लोड किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड हो तो उस तरह के लोड को कहते हैं हम लोग पॉइंट लोड। ओके, सेकंड है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है? लोड पर यूनिट लेंथ पर सेम हो, ठीक है, जो लोड है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है यूनिफॉर्मली बीम की पूरी लेंथ पर। मान लीजिए टोटल लोड W था और L लेंथ में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो टोटल जो लोड होगा पर यूनिट लेंथ पर वो हो गया W न्यूटन पर मीटर। 1 मीटर लेंथ पर W न्यूटन लोड आपका अप्लाई हो रहा है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और लास्ट टाइप का जो लोड है आपका वो है यूनिफॉर्मली वैरीइंग लोड। यूनिफॉर्मली वैरीइंग लोड में एक पॉइंट पर मान लीजिए लोड जीरो इंटेंसिटी है, 0 न्यूटन पर मीटर का, और अदर एंड पर जो इंटेंसिटी है लोड की वो है W न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पर W न्यूटन, और ये यूनिफॉर्मली वेरी किया लोड आपका, पहले 0, फिर 1 इंटेंसिटी, फिर 2 न्यूटन पर मीटर, फिर 3 न्यूटन पर मीटर, और अदर एंड पर W न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी से लोड वेरी किया आपका 0 से W। तो ये 3 टाइप के लोड्स होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सॉरी पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। ओके, इस चैप्टर में हम लोग इन तीनों टाइप के लोड्स के लिए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ेंगे। तो 6 केसेस हमारे पास होंगे कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्ट बीम के लिए, और 3 टाइप के लोड्स के लिए हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लोड्स एंड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स, और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर। ओके।